Hi everyone, I am Muhammad Furqan Ali Khan and yours math solver. As in my previous video of matrices, I have discussed about what is a matrix, notation of matrix, order of matrix, construction of matrix, and types of matrices. Today we discuss equality of matrix. Before it, first of all, a question. A matrix has 12 elements. Write its possible orders. I have already discussed about order like this 2, 3, 4, 5. This is a matrix of order 2 by 2. It means 2 rows, 2 columns. 2 rows and 2 columns. So this matrix is 2 by 2. And there are 4 elements in this matrix, but here is given 12 elements. Write its possible possible orders, all possible orders. तो इसको देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 12 इंटू 1, क्योंकि रो मैट्रिक्स मैंने बताई थी, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स. सो सेकेंड वन 1 इंटू 12, 1 बाई 12, ये भी पॉसिबल है. आफ्टर दिस 6 इंटू 2 एंड 2 इंटू 6 एंड 4 बाई 3 एंड 3 बाई 4. These order of matrices possible which has 12 elements. ये कितनी मैट्रिक्स होंगी? 1 2 3 4 5 6 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं जिनमें 12 एलिमेंट्स होंगे. ये ठीक है. तो आपको पता है कि इसके प्राइम फैक्टर्स जितने होंगे, तो प्राइम फैक्टर्स उतनी ही मैट्रिसेस पॉसिबल है. नेक्स्ट वन, a matrix has 7 elements. Writes its all possible orders. There are 7 elements. 7 is a prime number. In previous question, 12 is a composite number. 7 is a prime number, so there is a possible orders of matrices 7 by 1 and 1 by 7 only. If n is a number of elements, n is prime, then there are 2 possible cases, n by 1 and 1 by n orders. There are 2 orders of matrices possible if n is prime. Composite, then find the prime factors of all and write all matrices. Next question, if a equal to aij such that a equal to 4, this matrix is given, and find first of all order of a to 4, a 3 4. Order of a 1 2 3, there are 3 rows, so 3 by 4 columns, 1 2 3 4 columns, 3 by 4, so 3 by 4. Order of this matrix is 3 by 4, and the value of a to 4, second row, fourth column. The value of element of second row and fourth column. Second row, first row, second row, or fourth column. This is 6. Value of 6, and third row, fourth column. First, second, third row. Third row, first row, second row, third row, fourth column. 24. Its answer is minus 25. Now let us discuss equality of matrices. Suppose that if a matrix A of order m cross n, m by n, equal to matrix B of order R by S. This is possible only if first of all m equal to r, means number of rows of A equal to number of rows of B,
and second one n equal to s means number of columns of A equal to number of columns of B, and third property is corresponding Aij equal to corresponding Bij. It means elements of matrix A, corresponding elements of matrix A equal to corresponding element of matrix B. Like this, see A matrix है, ये A मैट्रिक्स है 2 3 4 5, और ये B मैट्रिक्स है, इसमें भी 2 यहाँ हो, 3 यहाँ हो और 5 यहाँ हो, 4 यहाँ। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स A, मान लीजिए A11 दोनों जगह 2 है, तो यहाँ इसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन का एलिमेंट सेम है, सारे एलिमेंट सेम है। इस तरीके से ये हम कहेंगे कि मैट्रिक्स A एंड B इक्वल है। क्वेश्चंस रिलेटेड टू इक्वलिटी ऑफ matrices. Here, find x, y, z and w such that x minus y, 2x minus y, 2z plus w, 2x plus w equal to 5, 12, 3, 15। ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। यहाँ पर आपको x एंड y अब ये इक्वल हैं, तो वी कैन डिस्कस ऑलरेडी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, थर्ड पॉइंट नोट करिए कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी विल बी इक्वल। तो अगर इनके मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन कंपेयरिंग लिख दीजिए, ऑन कंपेयरिंग corresponding elements of matrices, कंपेयर कर लीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इक्वल 12, 2z प्लस w इक्वल 3 and 2x plus w equal 15. Here is a lot of space. There are 4 variables equation. Combine it and solve. On solving, you get x equal to 7. Answer is x equal to 7. If you don't know solution, then I can make a separate video on this topic. Y equal to 2, z equal to 1, y equal to 2, z equal to 1 and w equal to also 1. This was solution. Next, similar question. A plus b 2 5 ab, 6 equal to 6 2 5 8. So on comparing the matrices, the corresponding elements of matrices, we will get A plus B equal to 6 and AB equal to 8, AB equal to 8. From here we get B equal to 8 by A. If we put here it, then A plus 8 by A equal to 6. A square minus 6a equal to minus 6a plus 8 equal to 0. Here quadratic question becomes, and a minus 4, a minus 2 equal to 0. Here we get a equal to 4 and a equal to 2. There are two values of a possible. If a equal to 4, then solution is putting here and b equal to 2. So a equal to 4, b equal to 2. If a equal to 2, then b equal to 4. There are two solutions possible. These are. Next one question. For what values of x and y are the matrices equal? A equal to 2x plus 1 3y 0, y square minus 5y, x plus 3
वाई स्क्वायर प्लस 2 0 माइनस 6. तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. इसे बनाते हैं डी आई वाई. कमेंट इट्स आंसर. डू इट योर सेल्फ. और इसके आंसर जो आ रहे हैं कमेंट करिए, बताइए. नाउ construction of matrix. We can construct a matrix on two bases. Number first, elements are given directly. Whenever elements are given directly, or either elements are given by a formula aij equal to something. यहाँ पर या तो वो डायरेक्टली एलिमेंट आपको गिवन है तो मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ये तो आपका बेसिक है, इस पे समझेंगे. एलिमेंट्स आर गिवन बाय अ फार्मूला ए इज इक्वल टू समथिंग फार्मूला. तो ऑन द बेसिस ऑफ वी सॉल्व टू क्वेश्चन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2 by 2 where first part aij is a function. Formula is I minus 2j whole square of I minus 2j or whole upon 2. तो 2 by 2 की मैट्रिक्स होगी आपकी A इक्वल टू A11 A12 A21 A22. ये 2 by 2 की मैट्रिक्स होगी. अब आपको A11 according to this formula we have to calculate the value of A11 A12 A13 A21 A22. A11, here I is 1 and j is also 1, so we have to put in this formula A11. We calculate A11. A11 1 minus 2 into 1 whole square upon 2, that is 1 minus 2. This becomes minus 1 1 upon 2, and we calculate A12. Similarly, A12 1 minus 2 into 2 whole square or upon 2, 9 upon 2. Now we calculate also A21 equal to 2 2 1 0 and A22. तो नेक्स्ट वन चलिए इधर कर देते हैं. A22 2 to the 4 minus 2 square 4 upon 2 2. So answer becomes A11 1 by 2 9 by 2 0 2. So next question, different question. Construct a matrix of order 2 by 2 where the function of elements is aij when I does not equal to j. Then mod of minus 3i plus j upon 2, and when I equal to j, like A11 जब A11 है या A22 है तो आपको वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है. I प्लस जे होल स्क्वायर ऑफ I प्लस जे. तो हमारी मैट्रिक्स क्या होगी? A11 A12 A21 A22. तो यहाँ पर A11 और A22 यहाँ से कैलकुलेट करने हैं और ये यहाँ से कैलकुलेट करने हैं. सो कैलकुलेट इट. A11 2 4, तो 4 A11 4 A22 16 A12 1 2 3 minus 1 1 upon 2. यहाँ पर 2 3 6 5 upon 2.
So this is answer. Hello. Next, there are two questions. Do yourself. It also you can try. Matrix of form of matrix A of order 2 by 2, where aij equal to e to power I 2ix sin x j. And next one, construct a matrix of order A, matrix of order 3 by 4 formula with the formula aij equal to 1 by 2 mod of minus 3i plus j. So calculate it and answer me. Comment answer. If you don't solve, then comment me. I will give you next video solution if you comment me. And in next upcoming video, I will discuss about the addition of matrices, subtraction of matrices, multiplication of matrices, different operation of matrices. So today's for sufficient. Thanks. Have a nice day.